You might just accidentally find some little sunscreen gems in this video. Hello my lovelies, welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, I'm Divya and I create content related to beauty, skincare, lifestyle, fashion, food, fitness and a lot more. This is like my digital diary where I keep posting my daily routines and everything that I do in my day-to-day life. शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आपको तो पता ही चल गया होगा आज की वीडियो किस बारे में है एंड एवरीथिंग, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। आई हैव 7 सनस्क्रीन्स विथ मी राइट हियर जो मैंने पर्सनली ट्राई किया है, टेस्ट किया है इन मुंबई हीट एंड इवन व्हेन आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। मैं ये 7 सनस्क्रीन्स में से ही कोई लेके जाती हूँ। लाइक ट्राइड है, टेस्टेड है, पर्सनली ये मेरे बेस्ट हैं। हो सकता है बाकी के ब्रांड्स जो आप यूज़ करते हो वो भी बहुत अच्छे हैं, but these are the ones that have worked for me. So if you are somebody who has a similar skin type, I have combination skin, you might just accidentally find some little sunscreen gems in this video. आते हैं हमारे पहले sunscreen पे, which has to be none other than the Beauty of Joseon sunscreen. Now this is a fantabulous product. I started using this from December 2025. I got this from pharmacy in Dubai and because मैंने यहाँ पे अब तक ट्राई नहीं किया था, नो नायका, नो टीरा, नथिंग. आई वेंट देयर एंड आई सॉ oh this is such a viral sunscreen and also let's give it a try and I have this one, the Relief Sun Protection one. अब इसमें क्या है, this leaves no white cast and I am not somebody who personally prefers sunscreen with makeup. So आपको मैं जो भी sunscreens बताऊंगी, I will tell you the best one to pair if you want to pair it with makeup. But if you're coming to me, I never apply sunscreen with my makeup because क्या होता है, आपके काफ़ी मेकअप प्रोडक्ट्स जो भी होंगे, स्पेशली जो अभी लॉन्च हो रहे हैं इन द कमिंग ईयर्स पोस्ट लॉकडाउन एंड ऑल, most products come with skincare and SPF benefits. So अगर आपको ऑलरेडी आपके मेकअप प्रोडक्ट्स में वो मिल रहा है, स्पेसिफिकली उसके अलावा सनस्क्रीन लगाना मुझे वर्थ नहीं लगता है. इट्स नॉट अबाउट वर्थ, लाइक इट इज़ एन एडिशनल स्टेप विच इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज आपको वो ऑलरेडी मेकअप प्रोडक्ट से मिल रहा है. नाउ द सेकेंड रीज़न आई फील इज़ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, कोई भी सनस्क्रीन में यू नेवर नो कि उसमें एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट लाइक इंग्रेडिएंट्स है या वो किस चीज़ों से बना हुआ है. there's a high possibility कि कोई भी सनस्क्रीन आपके मेकअप को ग्रे कर सकता है अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए with some other product or some other ingredient in some other product. Your face will start looking grey. So this is the only reason why I personally never use sunscreen under any of my makeup layers or anything. I apply this whenever I step out, I hit the gym, I go to any outings or anything. वो टाइम ठीक है, बट जब भी मेरे मुंह पे मेकअप है, you will never find me using a sunscreen with makeup. ठीक है. सो फर्स्ट आते हैं ब्यूटी ऑफ जोसन पे. जैसे मैंने बोला, इट्स अ वेरी नाइस वन. दिस वाज समवेयर फॉर आई थिंक 11 to 1200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई स्टिल चेक एंड लिस्ट द प्राइस. अब आते हैं सेकेंड ब्रांड पे जिससे आई हैव बीन लॉयल सिंस द टाइम आई स्टार्टेड यूजिंग सनस्क्रीन, विच हैज़ टू बी नन अदर दैन Minimalist. And I got this specific sunscreen in like PR and all, but this is the light fluid sunscreen which is SPF 50 plus. If you want a very thin layered sunscreen, just go and buy this blind. Number one, I really love the packing. I adore it because आपको बाकी sunscreens में ना, let me just open and show it to you. In most sunscreens that I've been using, you do not get this style of packaging. इसमें क्या है, you can just directly do this or directly just apply it on your hand and then spread it. बाकी sunscreens में it comes with the same nozzle type and everything, which can get a little bit messy depending on the packaging and the brand. इसका ये वाला is very nice. It's watery, but trust me, if you are a person who would like to layer your makeup with SPF, this has to be your pick. When I say minimalist is good, it's actually good. Now coming to the third one, this is for all my lazy people out there. एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है बिकॉज सनस्क्रीन्स आई बिलीव शुड बी ऑनेस्टली यूज्ड बाय गाइज ऑल्सो. यार स्किन तुम्हारी भी है, टैन तुम भी हो सकते हो. सो दिस वीडियो इज़ ओपन टू बोथ guys and girls. If you're a guy watching this, just make sure you use that sunscreen when you're stepping out in the sun. And this sunscreen that I'm going to tell you now is also for all the lazy guys and girls out there जिनको actually वो ट्यूब खोल के लगाने का मन या मेहनत नहीं करनी है.
This is a spray sunscreen which is from Skin Inspired. Now this is for 800 rupees. This is such a fab product, zero mess, ठीक है. There is no spillage or anything. बस आपको ये खोलना है and you just have to spray. This is so travel friendly also. Like कुछ भी नहीं, आप बस अपने लगेज में डाल दो तो चेक इन हो जाएगा एंड यू आर गुड टू गो. एंड लेट मी टेल यू द बेस्ट पार्ट, ये है SPF 80+. बाकी जितने भी सारे सनस्क्रीन्स हैं आपको मैक्सिमम 50-60+ ही मिलेगा, बट दिस वन इज़ 80+. इसका बेस्ट पार्ट बताऊँ क्या है, आपको ना ये स्पेसिफिक साइड का कुछ शाइन दिखेगा. दिस इज़ द ओनली सनस्क्रीन दैट आई हैव यूज्ड जिसमें ऐसा shine आता है after the use, which I kind of like. Now coming to the fourth sunscreen, which is specifically for all my sensitive skin girlies and guys out there. This is also from Skin Inspired. Now you will be like, यार green sunscreen क्या है? This sunscreen, I'm telling you, is actually green in color. You will not believe me unless I show it to you. So watch this. This is actually green in color. मुझे भी लगा था कि ये पता नहीं क्या ad है, but just look at this. Zero cuts in this video, just see. And ये आप spread करोगे ना तो normal आपका sunscreen जैसे ही लगेगा, but this is actually green in color. And ये पता है क्यों है? Because I just love the mechanism of how this sunscreen works. This green color is nothing else but made from chlorophyll. अगर आप बॉटल पे भी देखोगे ना, you will literally see it's powered by chlorophyll calm. This is for that kind of skin type जो बाकी sunscreens को reject कर दे. So for all my sensitive skin people out there, this can be your best pick. Only thing is ये green को ना अच्छे से blend करना. So blend करने के बाद ना वो sunscreen कुछ ऐसा लगेगा. आप you will not figure out the difference whether you applied a white colored sunscreen or a spray or a green colored sunscreen. And let me tell you one thing very honestly, no matter which sunscreen you're using or whatever product you're using, sunscreen हो, कोई makeup product हो, for that matter even अगर आपका कोई moisturizer हो, just make sure you are doing a patch test each and every time. You never know what your skin is going to react to. या किसी मेकअप प्रोडक्ट में कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ है जो आपके स्किन टाइप को सूट नहीं करे. सो जस्ट मेक श्योर नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट do a good patch test. Coming to the next sunscreen, which is none other than my favorite Hyphen sunscreen. When I tell you this is the all I need sunscreen, this is literally the all I need sunscreen. Kriti Sanon, you've done wonders with this product. जैसे मैंने आपको Minimalist का बताया था, Minimalist has such a nice fluidy kind of texture. Similar texture आपको मिलेगा Hyphen में. Okay, so let me tell you the price difference between both of these. Minimalist का sunscreen है 500 का और ये है 450 का. Now you tell me which one would you choose between Hyphen and Minimalist in the comments below. Coming to the last two sunscreens, I have one from Oshia. मुझे इसका दूसरा टाइम collaboration आया था. पहले collaboration में send the same sunscreen. In this collaboration also they send the same sunscreen. And honestly, I'm quite obsessed with how this performs. This is also very nice. इसका texture काफ़ी lightweight है और आपको लगेगा नहीं आपने sunscreen लगाया है. Whatever sunscreens that I'm suggesting are all sunscreens in which you will feel comfortable. आपको किसी में भी ऐसे नहीं लगेगा कि यार white cast आ रहा है or something. All of these are tried, tested, anti-white cast sunscreens है जो मैं आपको बता रही हूँ. Okay, so again, this is a very nice product. This is also for around 495 or 500. Last but not the least, I come to this sunscreen from Glazing Beauty. Now I received this one also in PR and I have to say I am obsessed with this. ये sunscreen थोड़ी thick है considering the texture and everything. So I use this when I travel to a cold place because वहाँ पे आप ये fluid sunscreen use करोगे ना, the skin is literally gonna crack up. Because of the kind of weather and everything, you need something thick in those weathers. Just like how अगर आप moisturizer use कर रहे हो वहाँ पे, so you will probably go in for something that is like thick like Cetaphil or something and not something like Nivea. Surprisingly, this sunscreen is also for 450 or 500 rupees. Let me know in the comments below if there are any brands that I should try or if I've missed any brands.